So welcome to the class, all of you. I hope all of you are doing good. So today we are going to discuss the circulatory system, and in circulatory system we are going to discuss the heart. Yes. So आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. So be there, students, and you will get to know a lot of new things, isn't it? So if I start with the heart, हार्ट हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट माना जाएगा. यस, इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देन इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन the blood vessels, that means arteries, veins, capillaries, है ना, as well as blood. This all together we can say that it forms the human circulatory system. If I talk about heart, हार्ट एक तरह से एक पंप का काम करता है हमारी बॉडी में. isn't it? It acts as a pump. We know that. What does the pump do? If I talk about a pump for a water pump, yes, so what is it doing? It is taking the water and it is giving out, है ना. It is taking the water from the tap and then it is giving out to some long distance or like that, है ना. So the heart, it is acting as a pump, whereas the pipes of the pump are what? Which are these are the blood vessels. जैसे कि arteries, veins, capillaries, they act as a pipe. Got it? So that from this pipe the blood can be transported. Got it, students? So this all together is your human circulatory system. इसमें से आज हम structure of heart पढ़ेंगे. In the next class definitely we will also see how the heart works. इट्स पंपिंग, किस तरह से पंपिंग होती है हार्ट की, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमको जानना जरूरी है कि हार्ट का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है ना, क्या क्या चीजें हैं. उसके बाद में हम उसका किस तरह से वो काम करता है, दैट वी विल डिस्कस. गॉट इट, स्टूडेंट्स? सो इफ आई टॉक अबाउट द हार्ट, दिस हार्ट इज अ hollow muscular organ, students, which is roughly triangular in shape. roughly क्या शेप का है? इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. गॉट इट? roughly triangular I can say. Then it is a muscular organ, that means it is made up of muscles. और जो muscles है हार्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं? They are the special type of muscles which are called as a cardiac muscles. yes, उनको हम बोलते हैं cardiac muscles. अब हार्ट कहाँ पर है? It lies in a thoracic region, जहाँ पर लंग्स भी रहेगा. So it lies in the thoracic region between the two lungs, right और left lungs के बीच में. या it is there slightly tilted towards the left. इसीलिए हम बोलते हैं कि heart is slightly towards the left side. Yes, so it is because it is slightly tilted towards the left, we say that it is towards the left side. Yes, but you should remember exact position. You can say that it is slightly towards the left, but it is there between the two lungs. Got it, students? Now if I talk about the adult human heart, so उसकी साइज कितनी होगी? तो उसकी साइज तो हम एग्जैक्टली वी कैन नॉट मेजर दैट, बट इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज ऑफ आवर फिस्ट, क्लोज फिस्ट. इसको मुट्ठी को यदि हम बंद कर देंगे तो इसका जो साइज रहेगा दैट विल बी द नॉर्मली the average size of a adult human heart, that comes to be generally 12 centimeter in length and 9 centimeter in width. Got it? So this is हम बोल सकते हैं कि ये हार्ट कहाँ रहता है. yes, उसकी साइज कितनी है? it is made up of cardiac muscles also. now properly यदि हम हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में सबसे बाहर का जो लेयर है, the outermost covering of the heart, डेफिनेटली इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. यस, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ पेरिकार्डियम. क्या बोलेंगे? इट इज पेरिकार्डियम. गॉट इट? सो व्हाट इज दिस पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम इज नथिंग बट it is a double layered membranous covering of the heart. yes, which is an outermost double layer membranous covering I can say, which is called as a pericardium. अब ये पेरिकार्डियम जो है ये डबल लेयर है. डबल लेयर है ना, दो लेयर रहेगी, एक रहेगी इनर लेयर और एक रहेगी आउटर लेयर. द इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, इट इज थिन. yes, and outer layer it is tough.
क्योंकि पेरिकार्डियम का काम क्या है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से तो उसको टफ चाहिए ना, सो द आउटर लेयर इज अ टफ लेयर ऑफ पेरिकार्डियम विच इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर है वी कॉल इट एज अ सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये इनर और आउटर लेयर के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग ये आपका आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है और ये आपका इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट एज अ पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, ये स्पेस में कुछ फ्लूइड रहता है, जो फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का काम क्या है, ये फ्लूइड का काम है कि दैट इट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट फ्रॉम द शॉक as well as from some sort of, if it is there some injuries could be there, so उससे उसको बचाता है हार्ट को। इस तरह से ये पूरा जो पेरिकार्डियम है विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट। ठीक है, so this is what is about the outer part or the outer covering of the heart. We can write it like this, if it is pericardium हम बोल सकते हैं it is double layered। यस, डबल लेयर। तो फिर एक इनर लेयर हो गया, इनर लेयर जो कि कैसा है, इट इज थिन। यस, एंड वी कॉल इट व्हाट, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। सिमिलरली जो आउटर लेयर है उस वो रहेगा आपका थिक, आउटर लेयर इज थिक and it is called as serous pericardium. अब what is pericardial cavity? I already told you that it is a cavity between the two membranes, cavity between two pericardial membranes. Isn't it? And in this cavity it consists of what? Pericardial fluid. अब इसका रोल क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड का? पेरिकार्डियल फ्लूइड का रोल है इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम शॉक and injury. Yes, pericardium, it is also protecting the heart. I hope this is clear. अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो this heart is, students, it is made up of 4 chambers. Yes, heart is made up of 4 chambers. ये जो ऊपर के जो 2 chambers है, yes, the 2 upper chamber, they are called as atrium. yes, उसको हम क्या बोलते हैं atrium या फिर atria बोलेंगे, और auricles also it is called as. And the lower 2 chambers, they are called as what? It is called as a ventricles. yes, उसको हम क्या बोलेंगे ventricles. तो हार्ट को हम एक लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं. yes, और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सेप्टम. यस, राइट और लेफ्ट साइड डिवाइड किससे हो रहा है? वो होता है इट इज डिवाइडिंग बाय रीजन, इट इज कॉल्ड एज अ सेप्टम. ठीक है, तो राइट साइड में जो ऊपर का पार्ट रहेगा इट इज राइट एट्रियम, और नीचे का पार्ट रहेगा राइट वेंट्रिकल. उसी तरह से लेफ्ट साइड में ऊपर का जो चेम्बर है दैट इज लेफ्ट एट्रियम, एंड द लोअर मोस्ट चेम्बर इट इज योर left ventricle. These 2 atrias, they are separated by interauricular septum. ठीक है, मैंने बताया था ना कि सेपरेट किससे हो रहा है? सेप्टम से. और जब ऑरिकल्स के बीच में है तो वो इंटरऑरिकुलर सेप्टम हो जाएगा. वेंट्रिकल्स दोनों सेपरेट कैसे हो रहा है? इट इज सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो आपको इसीलिए सेप्टम याद रखना है. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ वन मोर थिंग, दैट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को यदि कंपेयर करेंगे तो ऑरिकल्स की जो वॉल है, द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स और द एट्रियम्स, दे आर थिनर एज कंपेयर टू द
walls of the ventricles. Yeah, because why? Because the auricles or the atria, they just receive the blood from the body through the veins, है ना? Whereas this ventricles, what happens from there? The blood is pumped out. क्लियर? तो ऑरिकल में क्या होता है, ब्लड बाहर से वेन से अंदर आ रहा है और फिर वहां से ऑरिकल से वो वेंट्रिकल में जाएगा, या लेकिन वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बाहर फोर्स के साथ टू द बॉडी जाता है. दैट्स व्हाई द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर ऑलवेज thicker than the walls of atrium, or we can say the atrium wall are thinner than the walls of ventricle. यहाँ तक समझ में आया? Now don't look here, ये सारी चीजें मैं I will tell you one by one. Just remember this 4-5 things that we have discussed. The left and right atrium, left and right ventricle, and they are separated by a septum. Okay, so we'll just write it down in a short. उसको हम एक बार लिख लेते हैं short में. Just like a flow chart. I will suggest always, if you want you can draw such flow chart. इससे आपको learn भी हो जाएगा, isn't it? Heart made up of 4 chambers, isn't it? 4 chambers में upper 2 auricles plus lower 2 ventricles. Am I right? यदि मैं बात करूं ऑरिकल्स की तो it is having left auricle and left ventricle and left ventricle, left auricle and right auricle, very sorry. And the 2 ventricles, it will be again left ventricle and right ventricle, है ना? अब लेफ्ट ऑरिकल या फिर हम इसको स्टूडेंट्स एट्रियम भी बोलते हैं, रिमेंबर. So don't be confused. It is also called as atrium also. Okay. Now this left and right atrium or auricles, they are separated by, किससे separate हो रहे हैं? They are separated by interauricular septum. इसी तरह से ये दोनों वेंट्रिकल जो है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, दे आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर, है ना? नाउ this auricles, I told you that the walls of the auricles are thinner as compared to the walls of ventricles. If I talk about this auricles and the ventricles, remember यहाँ पे मैंने लिख के ही दिया है because this is important, that's why I have written here that if we talk about the walls of the ventricle is more thicker than the auricles, because ventricles have to pump blood with the pressure to all parts of the body. वेंट्रिकल से इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ब्लड बाहर निकल रहा है. जो पंप का आउटलेट है ना, दैट इज द वेंट्रिकल्स, एंड पंप का इनलेट जो रहेगा दैट विल बी द व्हाट, इट इज द ऑरिकल. सो जब भी अंदर आता है और बाहर निकलना है, तो जब बाहर निकलता है कोई भी चीज तो वो ज्यादा फोर्स से जाएगा. दैट्स व्हाई the walls are of the ventricle are more thicker. Okay, now ये तो समझ में आया कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिकर है, लेकिन यदि मैं बात करूं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के, उनके बीच में यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो स्टूडेंट्स से लेफ्ट वेंट्रिकल विल हैव मोर थिकर वॉल एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स. यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू. आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले यदि कोई पूछ रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, the walls of ventricle are thicker as compared to atrium. But if I am talking about the ventricles only, then again the wall of left ventricle is more thicker than the right ventricle. Again, why? Because
द राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, जो ब्लड है ना सिर्फ लंग्स तक जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल से लंग तक, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है ना वो हाई प्रेशर ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो सारे बॉडी के पार्ट्स में जाएगा. सो इट इज विद अ वेरी हाई प्रेशर. तो वो प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि बहुत फोर्स से जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है, तो इसीलिए उसके जो वॉल्स रहेगी वेंट्रिकल्स की वो सबसे ज्यादा थिक रहेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की आई एम टॉकिंग अबाउट. आई होप दिस इज क्लियर. सो वी कैन से दैट, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो एट्रिया है या ऑरिकल्स है ये क्या है, ये रिसीविंग चेम्बर्स है जो रिसीव कर रहा है ब्लड को, जबकि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या है, पंपिंग चेम्बर्स है जो कि ब्लड को पंप आउट कर रहा है. गॉट इट? I hope till now it is very much clear all the things. So now we know how the heart is made up of, how the 4 chambers are there. Now students, ब्लड आ रहा है अंदर एट्रियम में और वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है, तो कौन लेकर आ रहा है ब्लड को और कौन लेकर जा रहा है? So we will talk about the blood vessels now, which are bringing the blood into the heart and which is taking the blood out from the heart. ठीक है, अगेन द सेम, द फिगर इज देयर ऑफ द हार्ट. हियर यू कैन सी देयर आर सम अदर लेबलिंग्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. हमने ये पढ़ लिया स्टूडेंट्स, ये देख लिया हमने. दिस ऑल्सो वी हैव सीन एंड दिस ऑल्सो वी हैव सीन. हमने यहाँ तक अभी तक इतना पढ़ लिया है ना स्टूडेंट्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स टू एंड फ्रॉम द हार्ट. सो द राइट एट्रियम, सबसे पहले यदि मैं ये राइट एट्रियम की बात करूं तो आप देख सकते हो राइट एट्रियम, ये जो एरोस दिख रहे हैं आपको अंदर की साइड में जा रहा है ना. द राइट एट्रियम रिसीव 2 लार्ज ब्लड वेसल्स एज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. ये देख सकते हो, कैन यू सी देयर, दिस एंड दिस. सो दिस इज अ सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज योर इंफीरियर वेना केवा. तो इसके थ्रू ब्लड अंदर आता है, कहां पर, राइट एट्रियम में. आई होप दिस इज क्लियर. या नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, या इसको हमने सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा क्यों बोला है? सुपीरियर जिसको हम एंटीरियर भी बोल सकते हैं. सो दिस सुपीरियर वेना केवा या फिर केवल, प्री केवल भी बोलते हैं. इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखो स्टूडेंट्स, रिमेंबर द राइट साइड इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो राइट साइड रहता है हार्ट का वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो 4 चेम्बर्स में क्यों डिवाइड है हार्ट, why we need to divide it into this 4 chambers or why we are dividing it into right and left side. Yes, this 4 chambers actually students, they are meant to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated यानी the blood which is rich in oxygen, isn't it? Deoxygenated means where the oxygen amount is less but carbon dioxide amount is more. So heart में ये दोनों ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आता है. ये दोनों ब्लड मिक्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए हार्ट को चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है. सो हमेशा याद रखो, द राइट साइड ऑफ द हार्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी देयर, लेफ्ट साइड इट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो राइट साइड, और जैसे मैंने बताया कि एट्रियम से ब्लड अंदर आएगा और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, इतना याद रहेगा. तो यदि मैं अभी राइट एट्रियम की बात कर रही हूँ, एट्रियम मैंने ब्लड अंदर आएगा, राइट बोला तो मैम ने बोला इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो कौन सा ब्लड अंदर आ रहा है? द ब्लड विच इज कमिंग देयर फ्रॉम द राइट एट्रियम, दैट इज थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा. इट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड द अपर लिम्ब पार्ट. अपनी बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वहां से जो ब्लड आएगा वो थ्रू सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में जाएगा. जबकि लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो रहेंगे, है ना, जैसे एब्डोमेन हो गया, लेग्स हो गया,
तो यहाँ से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एंटर होगा थ्रू द इंफीरियर वेना केवा. I hope this is clear. So this is the superior and the inferior vena cava. कहाँ पे मैंने बताया? I told you that it is about the right atrium. Can we write here? हम लिख लें यहाँ पर उसको, so that we will not forget. Just a minute, we will take. Yeah, if I am talking about the right atrium, yes, it receives the blood from two large blood vessels, which is your superior vena cava, or it is also called as anterior. Just a minute. Yeah, vena cava, and this is your inferior vena cava. Or posterior. इसको बहुत बार it is also called as a precaval, students. Now the superior vena cava, it brings the deoxygenated blood from, कहाँ से ला रहा है? From the upper part of body. That is, we can say head, neck, upper limbs. And what about this? Lower parts of our body. Yes, like we can say legs, abdomen, जैसे कि मैंने बताया. So this was about your right atrium. Now if I talk about the left atrium, यदि मैं left atrium की बात करूं, so this left atrium, it receives 4 pulmonary veins, students. ठीक है, 4 pulmonary veins रहेगी जो कि रिसीव करता है आपका left atrium. 4 pulmonary veins, 2 from each lung, and it brings oxygenated blood. जैसे मैंने बताया कि left side है तो oxygenated blood आएगा ना. So this is the left pulmonary vein, students. Here you can see right pulmonary veins. Right pulmonary veins के 2 part रहेंगे, yes, and left pulmonary veins again 2. So in total कितनी होगी? 4 हो गए, isn't it? So this left atrium, I can say, it receives the oxygenated blood through the 4 pulmonary veins, 2 on each side, left as well as right pulmonary veins and left pulmonary veins. ठीक है, अब हो गया. अब बात होती है आपकी राइट वेंट्रिकल्स. यदि मैं बात करूं राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? ब्लड बाहर जा रहा है, isn't it? So the right ventricle, there will be pulmonary arteries. Okay. Now from this pulmonary arteries, the deoxygenated blood, it is taken out or it is carried from the right ventricles to the lungs for oxygenation. ठीक है, ये देखो आप, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज दिख रही है आपको, उसी तरह से राइट पल्मोनरी आर्टरीज है. तो ये लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगी? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पर लेकर जाएगी? इट विल टेक इट आउट टुवर्ड्स द लंग्स, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको वापस से प्यूरिफाई करने के लिए इसको बाहर लेकर जाएंगे टुवर्ड्स द लंग्स. नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम सेइंग नाउ दिस. हमको पता है कि आर्टरीज जनरली इट
takes the oxygenated blood, है ना. arteries बोला तो pure blood लेके जाती है, that is oxygenated blood, और veins बोला तो deoxygenated blood. बट आप यहाँ देखोगे मैं बोल रही हूँ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि मैंने बताया कि वेन्स जो है पल्मोनरी वेन्स वो ब्लड कौन सा ला रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है. सो दिस इज रिवर्स हियर इन केस ऑफ द एक्सचेंज बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स. हमेशा याद रखना जब हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वहां पर आर्टरीज हमेशा इम्प्योर ब्लड लाएगी और वेन्स हमेशा प्योर ब्लड लाएगी. दिस इज जस्ट रिवर्स देन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द आर्टरीज और वेन. हमारी बॉडी के पूरे और दूसरी सारी जगह पे जो आर्टरीज है हमेशा प्योर ब्लड लेकर जाती है और वेन्स है जो इम्प्योर ब्लड लाती है. लेकिन हार्ट और लंग्स के बीच की जो आर्टरीज एंड वेन्स है उनके नाम उल्टे हैं. आर्टरीज बोल दिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी मींस व्हिच इज कनेक्टेड विद द लंग्स. या सो पल्मोनरी आर्टरी बोला तो इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन बोला तो इट इज प्योर ब्लड. सो रिमेंबर दिस थिंग. आप ऐसे भी याद रख सकते हो. जब अब देखो मैंने आपको एकदम क्लियर बताया कि राइट साइड इम्प्योर है, लेफ्ट साइड प्योर है. एट्रियम से ब्लड अंदर आता है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है ना. इट इज वेरी मच सिंपल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट साइड नाउ, राइट एट्रियम and blood is coming in. If blood is coming in, I told you vena cava you have to remember. From the left atrium again blood is coming in and it is coming from the lungs. So it is pulmonary. So which blood will come inside? If it is your left atrium, the oxygenated blood. But I told you कि when it is coming from the lungs, we have to give the name as a vein. So it will be pulmonary vein. आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, है ना. If I talk about the ventricle, again right side बोला तो deoxygenated हो गया. ये यहाँ से ventricle से blood बाहर जाता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ जाएगा, वापस से लंग की तरफ जाएगा. यदि लंग की तरफ जा रहा है तो पल्मोनरी हो गया. बाहर जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आर्टरीज रहेगी बिकॉज इट इज पल्मोनरी. सो इन दिस वे ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. सो डोंट बिकम कंफ्यूज. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द this was the right ventricle. If I talk about the left ventricle, as I told you, from the left ventricle the blood is going to all parts of the body. So ये कहाँ से जाएगा, it goes through this aorta. Yes, it goes throughout. ये ventricle है आपका, left ventricle है. यहाँ से जो blood बाहर जाएगा it moves out through this aortas. ठीक है. इसके नाम रहेंगे. एट प्रेजेंट यू डोंट नो नीड टू गो विद द नेम्स देयर एज यू विल गो इन अ हायर क्लास. यू जस्ट आपको मैं फिर भी स्टिल आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा थिंग्स देयर. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. सो वी हैव रिटन हियर अबाउट द राइट एट्रियम, दैट द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. सिमिलरली वी विल राइट हियर फॉर द राइट वेंट्रिकल. शुड बी राइट फॉर द yeah, we will write that only. So this is the right side that we are covering. Okay, यहाँ पे भी deoxygenated blood रहेगा because it is a right side. Here also deoxygenated. Yes, if I am talking about the right ventricle, what is there? The pulmonary arteries will be there, isn't it? Left and right pulmonary arteries. What they will do? They carries the deoxygenated blood to the lungs. Carries deoxygenated blood to lungs फॉर ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन के लिए, इन्हें प्योर करने के लिए उसको लेकर जा रहे हैं. यस, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट योर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स. यहाँ तक समझ में आया.
अब हम लिख लेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बोला, सो व्हाट विल बी देयर? Yes, what you have to remember that it is your oxygenated blood, isn't it? So if I am talking about the left atrium, oxygenated blood, so this left atrium, it receives the pulmonary veins. Yes, left and right pulmonary veins. I can write here total four, that is total 4, 2 from each lung. Yes, what it will do, it brings the oxygenated blood from lungs. Yes, now it is your left ventricle. Left ventricle भी oxygenated blood के साथ ही रहेगा. So here also there is oxygenated blood. Blood यहाँ से बाहर जाएगा, so it goes out through the aorta. Yes, it is aorta. Yes, this aorta, it carries oxygenated blood and pass it to all parts of body. I hope now this is clear. We'll just highlight this: left ventricle, aorta, left atrium, the pulmonary veins. Got it? Here it will be the oxygenated blood. यहाँ तक समझ में आया? So these are the blood vessels which are coming in and which is going out from the heart. Now students, again a very important part, that is the walls of the heart. I'll show you in the figure again. एक बार हम figure देख लेते हैं. You can see here. There are some walls given. You can see here mitral valve दिया है, aortic valve दिया है, pulmonary valve दिया है, tricuspid valve दिया है. Now what are these 4 valves? Valve, we know what is the role of valve. Valve का function क्या होता है? किसी भी चीज में जब valve रहता है, जैसे it is valve is there in our tap, isn't it? From where the tap water comes, the tap it is having valve, and the valve is broken or it becomes loose, तो आपका जो स्प्रिंग रहेगा या जो आपका रोटेशन का रहेगा, or the tap it is not working properly. Yeah? So the valve generally, what is the role of valve? They regulate the flow. If I am talking about the valve in the heart, so heart में तो blood रहेगा, so these valves are regulating the flow of blood. Yes, ताकि जो आपका ब्लड यहाँ मूव हो रहा है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल, तो ये एक ही साइड में फ्लो होगा. यस, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रियम बैक नहीं होने देगा. दिस इज द मेन रोल ऑफ द वाल्व्स. ओके, नाउ देयर आर 4 वाल्व्स. हाउ मेनी वाल्व्स आर देयर? 4 वाल्व्स आर देयर इन द हार्ट. 2 वाल्व रहते हैं, एक रहेगा एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में. यस, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है. वे सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है. सो ये दोनों वॉल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहते हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स. दैट मीन्स इट इज बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स. In short, it is also called as AV valves. Now, if it is between the left and right atrium and ventricle, it is called as what? Mitral valve या फिर bicuspid valve. The valve that is between the right atrium and the right ventricle, it is called as a tricuspid valve. Got it? Then
देयर आर अदर टू वॉल्व्स जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, क्योंकि उसका शेप ही सेमी ल्यूनार जैसा रहेगा. एंड दे आर नथिंग बट द एओर्टिक वॉल्व, यहाँ पे लिखा है, और पल्मोनरी वॉल्व. देखो एओर्टिक वॉल्व कहाँ पे है, वेयर कैन यू सी द एओर्टिक वॉल्व? दिस इज द एओर्टिक वॉल्व. That means this is between what? This is between the left ventricle and द एओर्टा. ये जो एओर्टा है ना, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जो ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है उसके बीच में रहेगा. और चौथा ये जो पल्मोनरी वाल्व है, इट इज अगेन बिटवीन व्हाट? इट इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स एंड द पल्मोनरी आर्टरी. ये इस पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो रहेगा, ये देखो, ये दिस इज द पल्मोनरी वाल्व. From the right ventricle the blood is going to the artery, na, pulmonary artery, उसके बीच में. So all the time the valve is there so that the blood it cannot come back. वो एक ही direction में जाना चाहिए blood. That's why the valves are present. So 4 valves, always remember, between the atria and the ventricles. 2 valve हो गए on the both side and one on the each side, that is from the ventricle outside into the ventricle and aorta के बीच में रहेगा, that is your aortic valve. and ventricles and pulmonary arteries के बीच में जो रहेगा, that is your pulmonary valve. Yes, in this way the 4 valves are there, so we will just write it down about the valves. So I hope the flow chart it would be more better, easier if I am talking about the valves. Yes, the valves of heart, it can be, again we can make them as a atrioventricular valves, atrioventricular valves, and here I can write semilunar valves. Atrioventricular valve is also called as AV valves. Yes. Now what is the role of valves? Valves का काम क्या है? It regulates the flow of blood in single direction. Yes, in single direction. सिर्फ एक ही direction में उसको regulate करेगा. That means it is avoiding what? It avoids the backflow of the blood. Yeah. Now, if I talk about the atrioventricular valves, that means we can write here it is between atria and ventricles. है ना? Now they are again divided as a two. One is called as a tricuspid valve. Tricuspid valve. और दूसरा जो है it is bicuspid valve. ये जो tricuspid valve है, this tricuspid valve, why we call it as a tricuspid? Because it is having 3 cusp. 3 cusp यानी leaf like flaps. ये इस तरह से flaps रहता है. Yes, जैसे कि this is two, this is you can say bicuspid. जैसे 2 flap, this is 1 flap and this is another flap. In this way it will be closed. Open ऐसे हो जाएंगे, close ऐसा हो जाएगा. Yes. So it is 2 flaps, so it is bicuspid. Similarly, if the 3 flaps are there, it is called as a tricuspid. Bicuspid को हम लोग बहुत बार mitral valve भी बोलते हैं. What we call as mitral valve. Yes, it is made up of 2 cusp. Cusp यानी leaf-like structure, students, and this is made up of 3 cusp. Okay, now what is, where it is present? This is present between right auricle and right ventricle. ठीक है. If I talk about the mitral valve or the bicuspid valve, it is present between left auricle and left ventricle. Simple.
ये हो गए दो वॉल्व. अब यदि मैं बात करूं सेमिलुनर वॉल्व की, सेमिलुनर वॉल्व it is one is your pulmonary valve and another is your aortic valve. This pulmonary valves are students 3 in number. Yes, and they are pocket shaped. कैसे है? Pocket shaped के रहेंगे. ये दोनों valves सेमिलुनर में दोनों valve pocket shaped के रहेंगे. If I am talking about pulmonary valves, it is located at the opening of right ventricle into the pulmonary artery. जहाँ पर right ventricle open होता है for pulmonary artery, वहाँ पर ये रहेगा. Yes, if I talk about the aortic valve, it is also pocket shaped, students. And where it is located? It is located at point of origin of aorta from left ventricle. Just a minute. Yes, I hope this is clear. We can write here valves avoids backflow of blood. This is about the valves. Got it? The next thing, students, now we will discuss is there are some muscles which are called as papillary muscles. Or I think I have a figure also. Just a minute. I'll show you the figure only. उसी से हम समझ लेंगे. Yeah, you can see here. Here there are papillary muscles. Now what is this papillary muscles? Papillary muscles क्या होते हैं और कहाँ पर होते हैं? आप देख सकते हो. These are the papillary muscles. ये जो muscles हैं. These papillary muscles, students, they are attached to the atrioventricular valves. Atrioventricular valve यानी mitral valve और tricuspid valve. Yes, उसमें attached रहते हैं ये papillary muscles. They are attached to this valves by this thread-like structures. है ना, ये thread-like structures दिख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं caudy tendini. Suppose ये mitral valve है. Mitral valve यानी bicuspid valve जो कि left side में रहता है ना. ये देखो ये valve जैसा ही है ना. It is having the flaps like here, and this thread, through this thread-like structure, these muscles are attached. So this is a caudy tendini and the papillary muscles. इसका काम क्या है? या papillary muscles, students, contract. ये contract होते हैं जब ventricular valves जब contract होगी. जब ventricle जब contract होगा ना, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ ये पैपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए. अब जब पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो किसके साथ अटैच्ड है? उन्होंने ये वॉल्व्स को पकड़ के रखा है ना. सो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिस मसल्स पुल्स द वॉल्व्स टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स. जैसे मैंने ये बताया, ये आपका मिट्रल वॉल्व है ना, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दो फ्लैप का ऐसा है. यस, अब यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको कॉर्डी टेंडिनी से मसल्स अटैच रहेंगे, पेपिलरी मसल्स. जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो मसल्स भी स्ट्रेच हो गए ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गए. ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, तो ये वाल्व को ऐसे खींच लेंगे. सो दिस वाल्व्स इट विल बी क्लोज्ड और इट इज पुल द वाल्व्स टुवर्ड्स द वेंट्रिकल इनवर्ड्स, इस तरह से, और वो वाल्व्स बंद हो जाएंगे. सो दैट जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड तो बाहर निकल रहा है ना. यदि ये वाल्व खुले रहेंगे तो इट इज पॉसिबल दैट ब्लड कैन ऑल्सो गो अप टुवर्ड्स द ऑरिकल,
है ना, वो नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। और वो कौन करने में हेल्प करता है? दिस पेपिलरी मसल्स। आई होप दिस इज क्लियर। और पेपिलरी मसल्स को कौन अटैच करके रख रहा है? इट इज कॉर्डी टेंडेने। So if the chordate tendon ruptures for somehow, suppose कुछ इंजरी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, और इसमें से ये जो मसल्स है, ये टेंडन है, जो कॉर्डेट टेंडन है, ये रप्चर हो जाते हैं, या फिर एक आधा पेपिलरी मसल पैरालाइज्ड हो जाता है, काम नहीं करता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो वाल्व का जो काम करने का ढंग है वो वीक हो जाएगा। Isn't it? The valve bulges towards the atria. ये वेंट्रिकल की तरफ आने के बदले वो ऐसे चले जाएंगे एट्रिया की तरफ, तो इस तरह से वो ओपन हो जाएगा और आपका क्या हो सकता है? ब्लड कुड गो टू द एट्रियम, और इस तरह से आपका जो पैसेज है ब्लड का वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं जाएगा और लीकेज होना शुरू हो जाएगा। इट कैन लीक सीवियरली, और ये कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक इनकैपेसिटी। दैट मीन्स इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। What it is called? Cardiac incapacity. That's why this papillary muscles and the chordae tendineae, they also play a very important role. Okay, so I'll just write it down here. Papillary muscles, they are attached. I hope यहाँ तक समझ में आया। Two AV valves by chordae tendineae. Yes. So what happens there during ventricular contraction? During ventricular contraction, मैं short में लिख रही हूँ, you can write it down in detail also. I had explained you, है ना? These muscles, that means the papillary muscles, pulls the valves inwards, अंदर की तरफ, towards the ventricle, उसको pull करेंगे. Why? So that to prevent their bulging. Yes, to prevent their bulging towards auricles or atrium. समझ में आया? उसको नीचे खींचेंगे वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है? If suppose students, if chordae tendineae, sorry, if chordae tendineae ruptures, यदि ये रप्चर हो जाएगा और one of the papillary muscle पैरालाइज्ड, तो क्या हो जाएगा? Then the valve bulges towards atrium. Yes, and can leak severely. Leakage हो जाएगा. Yes, this results in cardiac incapacity. ठीक है? So that's why we can say this papillary muscles and the chordae tendineae, they are also very important. कहाँ रहते हैं? They are present at the atrioventricular wall. That means the bicuspid wall as well as the tricuspid wall. Now one more thing. ये हो गई आपकी हार्ट के बारे में. हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स कैसे आती हैं. देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द वाल्व्स. हमने ये भी पढ़ लिया कि जो एवी वाल्व्स है उसको होल्ड कौन करके रख रहा है? पैपिलरी मसल्स होल्ड करके रख रहे हैं. अब मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट के मसल्स है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स. एम आई राइट? अब हार्ट से तो पाइप लगे है, दैट मीन्स आर्टरीज वेन्स सारा है, तो हार्ट
ब्लड सप्लाई कर रहा है सारे बॉडी को, लेकिन हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट में भी तो ब्लड, हार्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गन ना, सो इट विल ऑल्सो रिक्वायर द ब्लड सप्लाई. उसके मसल्स को भी एनर्जी लगेगी, उसके लिए उसको भी इट नीड्स द ब्लड देयर. सो हु सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट? Yes, it is called as, students, the blood is supplied to the heart muscles by the coronary arteries. क्या बोलेंगे उसको? Coronary arteries. जो it is right coronary artery as well as left coronary arteries. Yeah. So the coronary arteries are responsible. You can see here, this is the left coronary arteries. So ये जो arteries है, which is called as the coronary arteries, they supply the blood to the muscles of the heart. और ये कोरोनरी आर्टरीज कहाँ से अराइज हो रही है? ये देखो क्या है ये? दिस आर द एओर्टा. एओर्टा से अराइज होगी. यस, सो दिस कोरोनरी आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा. अब यदि ये आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, तो क्या हो जाएगा? हार्ट मसल के वो पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, और वो एरिया में हम बोलेंगे वहां पर क्या हो गया? इट इज योर मायोकार्डियल इन्फेक्शन. यस, हम उसको बोलेंगे इट व्हाट हैपेंस देयर, इट द कंडीशन इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब तो प्योर ब्लड लेके जा रहा है ये कोरोनरी आर्टरीज. अब इम्प्योर ब्लड कहाँ से जाएगा? यस, it is done by this cardiac vein. The cardiac veins, it collects, you can see the cardiac vein, it collects what? It collects the blood from the heart and pour it into the right atrium. क्योंकि right atrium में impure blood आता है, फिर वहां से वो right ventricle से होते हुए कहाँ चला जाएगा? lungs में जाएगा for oxygenation, isn't it? So remember, the blood vessels that supplies blood to heart muscles. So वो कौन सी है? I will write here the coronary arteries. It would be left and right. Yes, arises from base of aorta and what it do? It supplies the blood to heart muscles. Okay, now remember, blockage in any coronary artery leads to deadening of that particular area. Yes, वहाँ उतना पार्ट डेड हो जाएगा, काम नहीं करेगा. leads to deadening of particular area. Yes, causing, it is called as a myocardial infarction. समझ में आया? So this is also very important, the role of coronary arteries. Remember, coronary arteries, that is supplying the oxygenated blood to the muscles of the heart. Similarly, we can write here the cardiac veins. Yes, they collect blood from heart muscles and pour it into right atrium. If there is insufficient supply of blood to the heart muscles को proper blood supply नहीं होगा,
So then it will lead to the pain in a chest. जो chest pain होता है ना, जिसको हम angina pectoris भी बोलते हैं. Yes, that is the insufficient supply of blood to the heart muscles. So I can also write here insufficient supply of blood to heart muscles leads to chest pain. और ये चेस्ट पेन वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एंजीना और एंजाइना पेक्टोरिस. I hope this is clear. Yeah. So this is what we have discussed about the heart. हमने हार्ट का स्ट्रक्चर आज बहुत अच्छे से समझ लिया. I hope आप लोगों को भी समझा होगा. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस तरह से हार्ट दो पार्ट में डिवाइड है, राइट और लेफ्ट. क्यों डिवाइड है? और वो दो पार्ट के साथ साथ टोटल 4 चेम्बर्स में डिवाइड है ना. एट्रिया और द वेंट्रिकल. उसके बाद में एट्रिया में ब्लड जो आता है वो बाहर से आ रहा है, अंदर आ रहा है, और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है. सो एट्रिया से ब्लड अंदर लाने में कौन हेल्प कर रहा है? द blood vessels. Which blood vessels are there and which blood vessels are taking the blood out from the ventricles? That also we have discussed. Then we have seen what are the different valves of the heart, है ना. 4 types of valves जो है वो कहाँ है और उनका काम क्या है? That also we have discussed. Then we have seen about the papillary muscles, yes, which are present with the atrioventricular valves. And also we have discussed about the blood vessels which are supplying the blood to the heart muscles, isn't it? और यदि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है? दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. I hope everything is very much clear to all you students. Remember one more point, जैसे कि मैंने बताया था कि यदि हम पल्मोनरी की बात कर रहे हैं, if we can write it down if you want, that here we can write here, isn't it? Note it down here. What? That if it is a pulmonary vein, it carries what? Oxygenated blood. Yes, and pulmonary artery deoxygenated blood. This is an exception, है ना. जनरल केस में आर्टरीज हो रहा है तो बोला है तो ऑक्सीजनेटेड होगा, और वेन्स बोला तो डीऑक्सीजनेटेड होगा. दिस इज एक्सेप्शन फॉर आर्टरीज एंड वेन्स. यस, सो रिमेम्बर दिस थिंग. ये आप याद रखोगे अच्छे से. आई होप दिस इज क्लियर. So we will stop here. In the next class, students, we will discuss how the heart works. So if you like the class, please subscribe the channel, Arth Academy official. Also you can download our app. It is with the name of same, Arth Academy. You can see this logo there, and the link of the app is also given in the description box. From there also you can download the app for the study materials, and all the video lectures, each and every topic is covered in detail there. Okay, so yeah, please subscribe the channel, share, and like if you like the class. Definitely. Till we meet in the next class, keep learning. All the very best for your studies, students. This is the link of the app. Also you will get the link there in the description box. Yes, so till then all of you, bye bye, take care. And yes, if you have any doubt, कोई भी query है, so don't worry, you can write it in the comment box. I'll definitely try to reply you. Okay, so till then all of you, bye bye and take care.